Hello class, this is Shruti Sahai and today we are going to discuss the lecture number 7 of unit 1. So the lecture number 7 is in the continuity of lecture number 6 if you have seen my previous lecture. So in the previous lecture we were discussing the rights of the surety. Right? So rights of the surety we were discussing, but before that I want to in the lecture previous lecture I have said that if you students are having, because it is a unilateral type of transaction. So if you student are having any problem after seeing the video, you can have the query. So only one student has given me the query on the WhatsApp, that is Harshit Yadav. उसने मुझसे पूछा था, so first I'll be sharing the screen. Harshit, you have asked me the question of just a minute, beta. I'll share the paint first and then only I'll answer the question. You have asked me, Harshit, the question of that is section number 141. Harshit has asked, and you people can also see, he has asked that section 141 may, ma'am, please explain the third line from that if the creditor loses. Okay? From if the creditor loses, say आप explain करिए तो. When so I hope so. If the creditor loses or without the consent of surety, parts with such security, the surety is discharged to the extent of the value of the security. तो जैसे मैंने तुम लोगों को हर्षित बताया था, ठीक है, हर्षित and all the students, please at the time when you are seeing this video, तो अपना Bear Act अपने हाथ में रखा करो. तो section 141 was the right of security against the creditor. This is right against the creditor. So the first line of section 141 was that कि it was like that a surety is entitled to the every benefit of security which the creditor has against the principal debtor at the time when the contract of suretyship is entered into, whether the surety knows the existence of security or not. So this was said that in the case creditor ने कोई भी security ली है principal debtor से, तो वो जो entitled है benefit का, वो सारा entitled security भी होगा उस security का जो creditor entitled है principal debtor के खिलाफ. ठीक है. अब भले ही at the time of suretyship was entered into, suppose the suretyship was entered into 1st May 2020, ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी 1st May 2020 में हुआ था और श्योरिटी को उस टाइम पे उसी समय पे उसने क्रेडिटर ने सिक्योरिटी भी दी थी, मींस उसने श्योरिटी भी दी थी प्लस एक सिक्योरिटी भी दी थी. तो जिस सिक्योरिटी का क्रेडिटर बेनिफिट देता है उसी आपके सिक्योरिटी का श्योरिटी भी बेनिफिट लेगा. ठीक है, वो इंटाइटल्ड है. द फर्स्ट वर्ड इज सेइंग अ श्योरिटी इज इंटाइटल्ड टू द बेनिफिट. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन. नाउ हर्षित हैज सेड that if the creditor loses or without the consent of surety parts with such security, the surety is discharged to the extent of the value of security. अब इसका क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनो. suppose and Harshit, suppose this is श्योरिटी ने प्रिंसिपल डेटर ने पैसे लिए क्रेडिटर से. ठीक, now it is like a mathematics. प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर से पैसे लिए 10,000 रुपीज. ओके, क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को 10,000 रुपीज दिए, इन अदर वर्ड्स, प्लस उसने एक 5,000 का फर्नीचर भी उसके साथ सिक्योरिटी पे रखा, प्लस उसने एक सिक्योरिटी तो वैल्यूएबल मूवेबल प्रॉपर्टी रखी जो मैंने बताई थी पिछले लेक्चर में. सेकंड, उसने कहा कि मुझे एक श्योरिटी, एक पर्सन भी चाहिए, पर्सन ए भी चाहिए. नाउ पर्सन एस is surety in this case. I want security in the case you are unable to pay, this person will see. Now transaction is one. Please understand the transaction is one, that is 10,000 rupees creditor is giving to principal debtor. He is taking two securities. One is furniture of 5,000 rupees and plus second is one person. This is person, that S is a person as a security. Okay. So this is where there is a contract of guaranteeship. This is happening on 1st May 2020. 2020 में ये ट्रांजैक्शन हो रहा है. ठीक, अब सपोज एट द टाइम the creditor loses or without the consent of, at the time surety is not having the knowledge कि मेरे साथ साथ एक फर्नीचर भी आपका सिक्योरिटी पे है. ठीक, और सपोज एक साल बाद 1st May 2021 में ये पैसे देने थे.
ठीक, किसको? प्रिंसिपल डेटर को पैसे देने थे क्रेडिटर को कि हाँ मैं 1 साल बाद आपको पैसे वापस कर दूंगा। ठीक, अब ये कहता है इफ द क्रेडिटर लूजेस और विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी पार्ट्स विद सच सिक्योरिटी, सपोज बिटवीन 1st May 2020 and 1st May 2021, somewhat 1st July 2020, 1st जुलाई 2020 में क्या करता है क्रेडिटर? क्रेडिटर ये 5,000 का फर्नीचर बेच देता है, 5K का फर्नीचर बेच देता है। ठीक है, विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी, बिना श्योरिटी के कंसेंट के वो 5,000 का फर्नीचर बेच देता है। अब ये बताओ क्रेडिटर, now in this case what will happen? Now see the Bear Act. If the creditor loses or without the consent of surety part with such security, the surety is discharged to the extent of the value of security. अब creditor on 1st July 2020 sold this furniture of 5,000 rupees. 5,000 का वो सेल आउट कर देता है उस केस में जो श्योरिटी है। जब 1st में 2021 को अगर प्रिंसिपल डेटर अनेबल है पे करने के लिए तो वो कितना पैसा देगा? He will only pay to creditor 5,000 rupees, क्योंकि वो 5,000 से क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, 5,000 में वो बेच दिया विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी। तो क्रेडिटर ने जब 5,000 रुपए का फर्नीचर बेच दिया 1 जुलाई 2020 को, तो उतने पैसे के लिए श्योरिटी इज डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी, क्योंकि the concept is that the liability of principal debtor is the liability of surety. Whatever the liability of principal debtor is equal to liability of surety. But in this case, the surety was also the guarantor, and there was one security. And creditor surety is also entitled to the security which creditor is entitled. And without the consent of surety, क्रेडिटर ने 5,000 रुपए का फर्नीचर बेच दिया 5,000 रुपए में। सो नाउ श्योरिटी इज डिस्चार्ज टू द लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द फर्नीचर। value of furniture was 5,000 rupees। 5,000 rupees का वो फर्नीचर था। अब श्योरिटी इस 5,000 rupees से डिस्चार्ज होगी, उसकी लायबिलिटी इज इन डिस्चार्ज, लायबिलिटी उसकी डिस्चार्ज होगी। This is the case. This is the section 141. ये 141 कह रहा है। Now you have also asked the illustration, Harshit, of section 141 का first illustration. Now please look at your Bear Act and then I'll answer. I'm repeating the class. I'm answering the question of Harshit. So now C advances to B, his tenant, 2,000 rupees on guarantee. Now in this first illustration of section 141, B is, look at your whiteboard, B is principal debtor. In this case, BSC advances to B, his tenant, 2,000 rupees on the guarantee of A. C is creditor, and in this case A is surety. A क्या है? Surety. ठीक, अब B ने C से 2,000 रुपए लिए या C ने B को 2,000 रुपीज दी। ठीक, 2,000 B को एडवांस दिया। फर्दर ऑल्सो ही फर्निश्ड अ सिक्योरिटी ऑफ 2,000, C also furnished a security of 2,000 rupees by mortgage of B's furniture. Now there are two securities. First is, now please see on your screen, पहला, first security is A as a surety is a security as a person. Second is 2,000 का फर्नीचर भी क्या है? श्योरिटी पे। तो मतलब एक आपने पैसे दिए, एक ट्रांजैक्शन क्रेडिटर ने किया, बी को उसने पैसे दिए। ठीक है, पैसे दिए, उसके बाद उसने एक ए को भी श्योरिटी पे रखा कि अगर तुम बी पैसे नहीं दोगे तो ए पैसे देगा। ठीक है, एक पर्सन को सिक्योरिटी पे रखा। दूसरा, उसने 2,000 का फर्नीचर भी मॉर्गेज करा दिया। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी को भी उसने मॉर्गेज करा दिया ना। सी कैंसिल्स द मॉर्गेज। बाद में सपोज फर्स्ट में 2020 को इसने ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में एंटर हुआ। दिस इज अ केस। नाउ यू कैन सी द सेकेंड लाइन, सी कैंसिल्स द मॉर्गेज। सी ने कैंसिल कर दिया, सी कैंसिल्स द मॉर्गेज, उसने मॉर्गेज कैंसिल कर दिया।
B becomes insolvent and C sues A on the guarantee. There are two situations. First, B ने B the sorry C cancels the mortgage. Creditor ने जो mortgage है इसको cancel कर दिया और उसने उसके बाद B insolvent हो गया. B के पास पैसे नहीं है. अब B के पास जब पैसे नहीं है, he is insolvent, तो C किसके पास जाएगा पैसे लेने के लिए? A के पास जाएगा. The surety, जो पहले नंबर की surety है उसकी, surety के पास जाएगा पैसे लेने. Now A is discharged from the liability to the amount of the value of furniture. When C has, A will only pay only that money, उतना ही वो liability होगा जितना value of furniture को हटा के जितना उसकी liability होगी उतनी ही होगी. बाकी जितनी भी liability, you can see the last line, A is discharged from the liability to the amount of value of furniture. Whatever was the value of the furniture, जो भी value थी furniture की, उसको हटा के ही he will be liable. Now you are getting confused that C has cancels the mortgage. इस लाइन से कंफ्यूज अगर हो रहे हो, C ने सपोज कैंसिल किया मॉर्गेज, उसने मॉर्गेज को कहा कि मुझे मॉर्गेज नहीं चाहिए, या उसने मॉर्गेज को बेच दिया, दोनों में कोई भी सिचुएशन हो सकती है. उसने मान लो 500 रुपए 500 रुपीज में उसने फर्नीचर बेच दिया. अब उसने कितना लिया था? 2000 रुपए लिया था, तो ए की जो लाइबिलिटी है वो 1500 रुपए की ही लाइबिलिटी हुई. 500 रुपए जो उसने मॉर्गेज कैंसिल करके बेच दिया, व्हाटएवर जो लाइबिलिटी थी उसकी वो हट गई. अब वो 500 रुपए के लिए ए इज नॉट लाइबल. ही इज द लास्ट लाइन इज सेइंग that A is discharged from the liability to the amount of the value of furniture. तो उतनी liability जो value of furniture की थी उसके वो discharge हो गया. So in the case Harshit, you see and you can refer. This was one student has asked me the question, so I have answered the question number section number 141. बाकी जिनको भी I am repeating it every time I am saying that जिसको भी कोई problem होती है after the further video, you can ask the questions by the medium of WhatsApp, and then I'll answer you in the next lecture. Now, starting with we have to do the rights of surety. So there are three types of already the surety I have told you कि 3 तरीके का rights होता है, ठीक है. जो students नहीं देखे हैं वो पिछला lecture देख लें. So right short में rights of, no, we have to be very fast. Rights of surety, तीन हेड्स में हम इसको पढ़ते हैं. पहला राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, राइट अगेंस्ट क्रेडिटर, राइट अगेंस्ट क्रेडिटर, एंड देन राइट अगेंस्ट कॉश्योरिटी. राइट अगेंस्ट श्योरिटी की 3 राइट्स होते हैं. राइट अगेंस्ट, राइट इज ऑलवेज इन द नेगेटिव, इसलिए इसको अगेंस्ट लिखा जाता है. राइट अगेंस्ट कॉश्योरिटी. तो हमको इस तरह से पढ़ना है. राइट ऑफ श्योरिटी वी हैव डन विद दिस. राइट अगेंस्ट क्रेडिटर, राइट्स अगेंस्ट क्रेडिटर कर लिया है. पहला राइट क्या था? सेक्शन 141 का राइट ऑफ सिक्योरिटी. एंड सेकंड आपका जो राइट था राइट उसमें राइट टू रिक्वेस्ट, राइट टू रिक्वेस्ट बताया था. राइट टू रिक्वेस्ट था कि श्योरिटी के जो श्योरिटी है वो उसका राइट है कि वो रिक्वेस्ट कर सकता है क्रेडिटर से कि उसको स्यू ना करके प्रिंसिपल डेटर को पहले स्यू कर दो. ठीक है, ये रिक्वेस्ट का राइट है, इट इज नॉट अ कमांड. So right against creditor हम लोग ने पढ़ लिया, that is section 141, right to security and right to request. Now today we'll be dealing with right against principal debtor and right against co-surety. ठीक है. अब the very important point, first we'll be discussing right against principal debtor. Surety के क्या rights होती हैं against principal debtor? Principal debtor के खिलाफ क्या rights हैं? So the very first right is right of subrogation. Right of subrogation. First, we have to understand what is right. What do you mean by subrogation? Subrogation का मतलब क्या होता है? तो subrogation is where stepping into the shoes of another. Subrogation जो है उसका जो word है, the subrogation means transfer of right. ठीक है, transfer of right from one person to another person. Please understand this. Transfer of right from one person. Transfer of right. It is actually transfer of subrogation means transfer of right from one person to another person, or in small words we say stepping into the shoes of another person. दूसरे के shoes में घुसना, stepping into the shoes of another person. This is known as right of subrogation. This is known, the word literally means subrogation means transferring a right of one from one person to another person, or we can say that stepping into the shoes of another person. अब ये होता क्या है? ठीक, suppose
देर आर थ्री पार्टीज, सब्रोगेशन को ध्यान से समझो, थ्री पार्टीज हैं यहाँ पर, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी, ठीक है। सपोज creditor has given 10,000 rupees to principal debtor, ठीक, surety has taken the guarantee of this transaction. Creditor asks principal debtor to pay the amount after some time. Principal debtor defaults in payment. Principal debtor default कर दिया payment में, तो creditor will ask from the payment, किससे पूछेगा creditor? पैसे लेगा, surety से पैसे लेगा. Once the surety has given the payment under the contract of guarantee, understand, once the surety has given the payment under the contract of guarantee, now after the payment, I am saying this, after the payment has been made, after he has fulfilled the obligation of creditor, the surety will step into the shoes of creditor. Surety creditor के shoes में step कर जाएगी, और वो जो right creditor का था principal debtor से, अब वो right surety का होगा principal debt, surety का होगा principal debtor से. Now surety will step into the shoes of principal creditor, and all the rights which the creditor was having against the principal debtor, now the surety will have against the principal debtor. This is right of surety against principal debtor. ये right of surety होता है principal debtor के खिलाफ. I am explaining it. फिर से I am explaining it. It is a very important right, so you have to understand this. Just a minute. Suppose, just a minute. Suppose creditor has given principal debtor 10,000 rupees or 10,000 rupees. ठीक? Now he has taken, इसको मैथमेटिक्स की तरह समझना, creditor has taken the secured a guarantor, that is S, surety. He has taken a security or surety person. उसने एक व्यक्ति को बोला कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो प्रिंसिपल डेटर पैसे नहीं देगा, तो श्योरिटी पैसे देगा, ठीक है, ये जो ट्रांजैक्शन थी. अब इसने एक सिक्योरिटी, क्रेडिटर ने एक सिक्योरिटी भी रखी, सिक्योरिटी ऑफ सपोज अ गोल्ड चेन, गोल्ड चेन एक सिक्योरिटी में भी रखी, उसने गिरवी रखवा दी, ठीक. अब श्योरिटी के पास, अब यहाँ अगर आप देखो तो प्रिंसिपल डेटर ने पैसे लिए क्रेडिटर से 10,000 रुपए, या क्रेडिटर ने पैसे दिए प्रिंसिपल डेटर को 10,000 रुपए, क्रेडिटर में साथ साथ में गोल्ड चेन भी रखी, ठीक है, और उसने श्योरिटी भी, एक इंसान को बोला कि अगर ये पैसे नहीं देगा तो श्योरिटी पैसे देगा, मतलब श्योरिटी ने कहा कि अगर प्रिंसिपल डेटर को आप पैसे दे दो, अगर इसने नहीं दिया तो मैं पैसे दूंगा. तो क्रेडिटर के पास दो सिक्योरिटीज हैं, एक है श्योरिटी एस और एक है गोल्ड चेन जो गिरवी उसने रखी, ठीक. अब डिफॉल्ट इन पेमेंट हो गया. 1 मई 2021 को प्रिंसिपल डेटर को पैसे देना था, 1 मई 2020 को उसकी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हुई थी कि मैं 1 साल बाद पैसे दे दूंगा, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट में दूंगा, 10,000 प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, पैसे दूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी थी. ऑन 1 मई 2021 प्रिंसिपल डेटर मेड अ डिफॉल्ट इन पेमेंट, उसने डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट में, ठीक, डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट में, ऑलरेडी यू हैव सीन इन सेक्शन 126, ठीक. Now the default in the liability after the default comes on surety. अब प्रिंस क्रेडिटर ने he sued surety, उसने surety को sue किया and he took the amount. Now I am using, he took the amount from surety. Now surety gave, surety ने प्रिंस क्रेडिटर को he gave the principal sum, see, principal sum plus interest amount he has given, ठीक है. अब now whatever the, अब उसने पैसे दे दिए तो whatever the rights, surety is relieved, creditor is relieved from this contract of guarantee. Now he is not in the scene. अब he is not in the scene. Now whatever the rights of creditor was having, now creditor went to the home after taking all the money of contract of guarantee, surety will come into the shoes of creditor, and whatever the amount, principal sum plus interest plus security of gold chain जो gold chain था, whatever the right creditor was having against the principal debtor, now surety will have against principal debtor. This is known as right of subrogation.
इसको हम राइट ऑफ सब्रोगेशन कहते हैं, which has explained in section 140 of Indian Contract Act 1872. इसको 140 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में गया है। सब्रोगेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ राइट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। नाउ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन द नोट्स। Just a minute, I am sharing the notes. I hope so. Right of subrogation, because it is easy and you will able to now you can see on your screen right of subrogation, and I'll be sharing you people the notes. As you can see, right of subrogation, where there is a guaranteed, section 140 provides right of subrogation where there is a guaranteed debt has become due, where there is a guaranteed debt and it has become due, or default of the payment of principal debtor to perform a guarantee duty has taken place. Where a guaranteed debt has become due means there was a guaranteed debt into May 2020, there was a guaranteed debt which has become due, means in 2021 the principal debtor has to pay it. Okay? And or default of the payment of principal debtor to perform a guarantee duty has taken place. A principal debtor has defaulted in the payment which he has to perform. Upon payment of performance of all he is liable for is invested all the rights which the creditor has against the principal debtor. Surety, once he has made the payment and performed all the liability of principal debtor, then all the rights which the creditor, सारे राइट्स जो क्रेडिटर के पास थे, ठीक है, प्रिंसिपल डेटर के खिलाफ सारे राइट्स जो क्रेडिटर के पास थे, विच द क्रेडिटर हैज अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, वो सारे राइट्स श्योरिटी के पास चले जाएंगे। दिस इज नोन एज राइट ऑफ सब्रोगेशन। इसको हम राइट ऑफ सब्रोगेशन कहते हैं। आई विल बी जस्ट अ मिनट। I don't know how the pen will work because मैंने तो click किया, but ठीक है। So this is where the creditor has the, now you can understand the site of subrogation. Now when the surety has paid all he is liable for, he is invested, you can see on your screen where the surety has paid all that he is liable for, he has invested all the rights which the creditor has against the principal debtor. The surety stepped into the shoes of creditor. This line is very important. The surety stepped into the shoes of the creditor. The creditor has the right to sue the principal debtor. Now, creditor has a right if the liability of the surety is coextensive with that of principal debtor. This is the line, that if the liability of the surety is coextensive with that of the principal debtor, his right is not less coextensive with that of creditor if he satisfies the creditor's debt. अगर हम ये कहते हैं कि जो लाइबिलिटी है श्योरिटी की वो को एक्सटेंसिव है प्रिंसिपल डेटर से, तो उसकी जो राइट्स हैं वो भी को एक्सटेंसिव हैं with the creditor. So once the surety has performed all the liabilities of the creditor, he step into the shoes of surety, step into the shoes of the creditor, and he has all the rights which the creditor could have against the principal debtor. I hope so that this is, we don't need to linger on this point anymore. Now the next is right to indemnity, which is, I have said that it is the implied promise by the implied promise by this particular, just a minute, but I'm seeing where I can use the pen. I hope so. I today I'm not able to use the pen because of certain reasons. We'll see with the pen. Now, the section 145 is saying in the implied promise to indemnify surety. As you can see on your screen, in every contract of guarantee, there is an implied promise by the principal debtor to indemnify the surety. I know that you will get confused. First, understand this. What is right of indemnity? The creditor, the surety rights against principal debtor. The first right we have studied the right of subrogation. The second right is right of surety against the principal debtor. That is right to indemnity. That is section 145. In every contract of guarantee, there is an implied promise by the principal debtor to indemnify the surety.
to indemnify the surety, and the surety is entitled to recover from the principal debtor whatever sum he has rightfully paid under the guarantee, but no sum which he has paid wrongfully. Now, this is where कि जो भी अगर प्रिंसिपल डेटर कोई भी डिफॉल्ट करता है और क्रेडिटर जो भी पैसे श्योरिटी जो भी पैसे दे रहा है, तो श्योरिटी का अधिकार है कि वो प्रिंसिपल डेटर से इंडेमनिटी ले ले, मतलब उससे कंपनसेशन ले ले, जो भी whatever sum principal debtor has rightfully paid under the guarantee, जो भी वो रिकवर कर ले whatever he is paying rightfully, but no sum which he has paid wrongfully. कोई भी चीज जो वो wrongfully contract of guarantee में पे किया है, वो surety उसके surety वो पैसे नहीं देगा, but whatever the has been paid rightfully, that payment will surety will give. Now you will confuse कि what is the difference between section 140 and section 145. सब्रोगेशन भी यही बात कहती है और इंडेमनिटी भी यही बात कहती है. इंडेमनिटी इज अ स्टैट्यूटरी राइट. इंडेमनिटी एक इस तरह का स्टैट्यूटरी राइट है जो दिया गया है. अब सपोज बी इंडेप्टेड, बी आई एम कमिंग टू द पॉइंट एंड आई थिंक आई विल मेक यू पीपल मोर अंडरस्टैंड. वेल दिस इज आई थिंक द मोस्ट easy way to understand this. Just a minute. When you can see the illustration, from the illustration I'll make you people understand. A is indebted to C. B is indebted to C, the C illustration 1 of section 145. C is the creditor, B is the principal debtor, and A is surety for the debt. In section, now this is example of section 145 of illustration 1. Okay? C demands payment from A. C demands on the refusal sues him the amount. अब A जो है वो surety है. C demands payment from A. C ने A से payment demand किया और कहा कि अगर तुम and refusal sues him from the amount, और A ने refusal किया तो उसको sue कर दिया. A defends the suit. A ने मुकदमा लड़ा C के खिलाफ, लेकिन उसको कंपेल करना पड़ा, मतलब कोर्ट ने कहा कि नहीं, ए आपको सी को पैसा देना पड़ेगा क्योंकि आप क्या हो, श्योरिटी. ठीक. नाउ ए ने जो भी पैसा सी को दिया है, व्हाट द वर्ड दे आर यूजिंग, ही कैन ए डिफेंड्स द सूट हैविंग रीजनेबली ग्राउंड फॉर डूइंग सो, बट ही इज कंपेल्ड टू पे द अमाउंट टू डेट विद कॉस्ट. उसने जो डेट तो दिया ही, प्लस जो भी कोर्ट का खर्चा आया कॉस्ट, उसके साथ वो कॉस्ट भी उसने दिया. ठीक, कोर्ट से. He can recover from B the amount paid by him for the cost as well as the principal debt. Now A जो है वो रिकवर कर सकता है B से जो भी डेट उसने दिया है और जो भी कॉस्ट उसमें कोर्ट में दिया है, ये दोनों वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के थ्रू रिकवर कर सकता है. दिस इज वेयर इट इज सेड दैट इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन A and B. It is an implied contract between surety and principal debtor that surety has a right against the principal debtor that whatever the sum he is paying in contract of guarantee and whatever the cost, whatever the thing he is paying in contract of guarantee, he can indemnify it from principal debtor. Now, this is a statutory right. This is a statutory right which is being provided into the Contract Act. How it is different from right of subrogation? In right of subrogation, in right of subrogation, the object of section, see, I'm writing it, it is very important. In right of subrogation, the object of the legislature is that surety will come into the shoes of creditor when, and whatever the rights of creditor was having against the principal debtor, now surety will have. Whether it is the right of principal debt, whether it is a right of security, whether it is right of interest, whatever the right sure creditor was having before the payment, after once it has been paid by the surety is having all the rights against the principal debtor. Wherein so in case of contract of indemnity is simple. It is only the simple words of section 145 is that it is an implied statutory indemnity between the principal debtor and surety. That if in the case in the contract of guarantee, whatever the creditor has taken, whatever surety has given payment to the creditor, so it is an implied contract that he will take from principal debtor. So this is a statutory statutory legislation section which 145 is there.
Now, right against, there are two rights which has been exhausted. Now the third right is right against co-surety. Right of surety against co-surety. Right of surety against co-surety. ये क्या होता है? What is co-surety? I hope so you people will understand in the second semester. We have done in the first semester. Right of surety against co-surety. Suppose there are more than one surety in the transaction. अब this right of surety, co-surety is given in section 146. ठीक है, आप बेयर एक्ट देखते रहिएगा. और अब इसमें पहले बेयर एक्ट पढ़ने से पहले यहाँ पर प्रिंसिपल डेटर है, इसने पैसे लिए क्रेडिटर से 50,000 रुपए, ठीक. और इस पे 5 श्योरिटीज, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5. जब जॉइंट प्रोमिसर की बात किए थे, सेम एग्जांपल इस पे अटैच होगा. जॉइंट प्रोमिसर जिन्होंने क्लासेस की हैं जॉइंट प्रोमिसर की, 5 श्योरिटीज, ठीक. What are the right? Now section 146 is saying right of surety against co-surety. Suppose creditor has given 50,000 rupees to principal debtor. This is an example. He has, on this particular one transaction, there are 5 sureties. That in the case principal debtor will not pay the amount. मैं सबको एक साथ क्रक्स में पढ़ा रही हूँ. In the case principal debtor will not pay the amount, I will to the creditor, we will pay. Now the surety can be jointly liable or they can be severely liable. जो दोनों हो सकते हैं. Suppose क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर ने अमाउंट ही डिफॉल्टेड इन द पेमेंट, इसने डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट से, ठीक, डिफॉल्ट कर दिया. इन दिस केस क्रेडिटर ने एक श्योरिटी को स्यू किया, दैट इज S3. इसने S3 को स्यू किया और S3 से इसने 50,000 रुपए निकाल लिए, ठीक. नाउ व्हाट इज द राइट ऑफ S3? S3 के पास राइट है कि वो S1 प्लस S2 प्लस S4 प्लस S5 इन सबसे पैसे ले सकता है. This is the right of surety against co-surety. This is the right of surety, one surety, that in the case he has given full amount to the creditor, he has a right to take it afterwards from all the sureties. All the co-sureties are liable. Okay? This is where you will see section 146, where two or more person. Now I'll be coming towards the notes. Where two or more person, just a minute. Right of co-surety, right of contribution, where two or more person are co-sureties. You can see on your screen where two or more person are co-surety for the same debt, okay, either jointly or severally, and whether under the same or different contracts, and whether with or without the knowledge of each other. The co-surety in the absence to the contract of the contrary. We will come to this later, okay. We have to not read this. Where two or more person are co-surety for the same debt or duty, either jointly or severally, and whether under the same different contracts, and whether and without the knowledge of each other, as between themselves, to pay each an equal share of the whole debt or part of it which remains unpaid by the principal debtor. So in the case one surety has given the full payment to the creditor, he is entitled to take the payment of equal contribution to every security. Suppose you can see the illustration. A, B and C as sureties to D for the sum of 3,000 rupees lent to E. Now E is principal debtor and A, B, C 3 are sureties towards D. D is creditor. Now E makes default in payment, principal debtor has made default in payment. A, B, C are liable as between themselves to pay 1,000 each. 1,000 रुपए पूरा देने के लिए वो liable तीनों है, severely भी है और jointly भी है. A, B, now see the second illustration. A, B, C are sureties to D for the sum of 1,000 rupees lent to E, and there is a contract between A, B and C that A is responsible to the extent of 1 quarter, B to the extent of 1 quarter, and C to the extent of 1/2. E makes defaults in payment and between the surety. A is liable to pay 250 rupees, B is 250 rupees and C is 500 rupees. So those students who are my students, they know that it is just a case of promisor and joint promisor. ठीक है, just it is a case of joint promisor जो मैंने आपको पिछले सेमेस्टर में पढ़ाया था, वही ये केस है. जैसे कि अगर अब ये तो एग्जांपल आपने देख लिया. नाउ सेकंड एग्जांपल, as between the contract to the contrary.
अब सपोज देर आर 3 सिचुएशन जो हम जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे और इस वीडियो को खत्म करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 146। ठीक, अब एक प्रिंसिपल डेटर, 3 श्योरिटीज S1 S2 प्लस S3 और क्रेडिटर ने 30,000 रुपए दिए। ठीक, क्रेडिटर के पास ऑप्शन है पहले सिचुएशन में, अगर उसने पहले S1 से पैसे पूरे ले लिए, ठीक, तो S1 के पास अधिकार है कि वो S2 प्लस S3 से पैसे निकलवा ले। मान लो उसने 30,000 रुपए पूरे लिए, 30,000 रुपए उसने पूरे क्रेडिटर को दे दिए, अब वो 10,000 रुपए S2 और S3 से ले सकता है। सपोज देयर इज अ सेकंड सिचुएशन कि केवल ये जो सेवियरली लायबल है, ज्वाइंटली लायबल नहीं। मान लो S1 प्लस S2 प्लस S3, ठीक है, क्रेडिटर ने दिए 30,000 रुपए। ठीक, 30,000 रुपए दिए प्रिंसिपल डेटर को, क्रेडिटर S1, और ये केवल 10,000 रुपीज के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम केवल 10,000 रुपए के लिए ही श्योरिटी लेंगे, हमसे टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000 रुपीज, हम 10,000 से ज्यादा पैसे की श्योरिटी नहीं लेते। S1 ने सिवियरली अलग लिया है 10,000, S2 ने अलग 10,000 दिया और S3 ने अलग 10,000 दिया। अब इस केस में क्रेडिटर इन द डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट में, तो क्रेडिटर कितना निकाल सकता है S1 से? S1 से केवल वो 10,000 रुपए ही निकाल सकता है। सेम वो S2 से केवल 10,000 रुपए ही वो कह सकता है, और S3 से भी वो केवल 10,000 रुपए के लिए ही S3 लायबल है, ये लोग पूरे पैसे के लिए लायबल नहीं। This is the case of section 146 and 147. I hope so that in joint promissor I have already explained you this fact, so you will the same, that is the concept is here, ये same concept यहाँ पर होता है। ठीक है, thank you class, and we have already, now you can see that you have to read this in the 3 different heads, as you can see on your notes में भी आप देख सकते हो, मैंने ERP पे notes upload कर दिए हैं, तो please you do check on ERP now. There is a rights of surety, rights against principal debtor, clear है, one subrogation, right of subrogation 140, right to indemnity, right against creditor is right to security, right of surety against creditor is right to security, section 141, right surety against cost surety is right to contribution, that is section 146 and 147, which equally stating liability of cost surety ki liability kya hoti hai cost surety ki. So please you read, and in any case you are having any problem, you do ask me by the WhatsApp question, जैसे हर्षित ने पूछा था और मैं उसको जवाब दे दूंगी in the next video lecture. Now in the next lecture we'll be studying the difference between indemnity and guarantee, which will be the short video, and the continuing guarantee पे हम लोग पढ़ेंगे. Thank you class.